RCC presented by UVAP. I am Vikas Khurana and I am honored to be your host for the show. At RCC, it is our mission to promote health and wellness by bringing experts from the industry to share their knowledge with our viewers. Over the course of our series, we invite specialists from various fields, including fitness, nutrition, mental health, and overall wellness. They share their expertise and offer practical advice on how to make healthy choices in everyday's life. So sit back and relax. Today, we have got a very special guest, Mr. Pankaj Agarwal, an accomplished engineer and management graduate, technologist, strategist with over 2 decades of experience in telecom industries. Mr. Agarwal has held various leadership positions at multinational companies such as Siemens, Lucent, and Motorola, contributing significantly to their growth and success. Apart from his personal expertise, Mr. Agarwal is deeply passionate about organic products and has made it its life commitment. For the last 10 years, he has been leading the brand Just Organic, which has become a household name in India as well as in export market like USA, Singapore, UAE, Canada, Vietnam, and more. So, welcome, Pankaj sir. Thank you. Okay, so it's English is fine. So, sorry. So, thank you so much, Pankaj sir, for your time today. First of all, take us through your journey कि कैसे आपकी journey रही and आपने कैसे मतलब because you have experience of 16 years in telecom industry and then you moved to organic industry. तो कैसे आपका ये shift हुआ and how you started your journey? Well, yeah. So it's very interesting. So initial years, as you know, that I spent in the corporate sector. Going through the regular churn of traveling around the world, and going from one stage to another stage, from a executive to a manager to a senior manager and to a director. All those things. So all that continued. But I think at some point in time, you start feeling in your life that there has to be little bit more meaning to what you are doing, and it happens probably in everyone's life, and that's when you start realizing that what are the options that are there in front of you. Luckily for me, my life partner, my better half, she was already in the business of some social impact, working through the SRF Foundation, uh, working in one of the most backward regions in Haryana. And I think one thing led to another one. There were a couple of events that were also life-changing events that sort of triggered the whole process a little bit more and pushed us in a direction where we started saying that, yes, doing something of your own definitely makes sense, because this is the era of the startups, Entrepreneurships. this thing. But what is that something is also important, and what is that something that can basically be used to give back to the society, be more connected to the ground, to the environment, etc., etc. So I think one thing led to another one, and here we are. Started this in 2013, and we are now completing 10 years of our journey. It's a uh, great journey, sir. Right. So, sir, for starting this organic industry, did you face any specific challenges while to set up this organic industry? Just yeah, organic. yeah. So basically, there were two sets of the challenges that we faced. The first set of the challenges, of course, was myself own, or the team uh, didn't know anything about agriculture, food, organic, retail, consumer. All of these words were relatively new. Didn't know much about it, so we had to unlearn a lot of things and learn a lot of things on our own. Right. The second part was basically the consumer side. So when you learn the things, when you launch something, then ultimately, consumer has to pick it up. Consumer has to buy it. They have to consume. That's why they are consumer, right? And unless they start consuming, you are not selling. Correct. And organic being such a new concept 10 years back, it was difficult to convince the consumers that, there is this different concept. So basically, just the communication with the consumers was challenging, because the social media, the Insta, the backstage, all these studio talks, etc., these were not popular, these were not common, right? So people were still evolving to the data usage. It was difficult task to communicate with the consumer. Once you communicate with the consumer, it becomes easy to then convince and make sure that he start buying it. So those were some of the challenges. But yes, I think the first challenge was easier to overcome, where you have to shed all the
reservations, apprehensions, learnings, etc., and then say, okay, I have a new life, I have a new personality. Let me learn from zero. Let me start from zero and see that where do we reach. So, sir, we will come on the product details later in the session. So, starting with जो हमारा आज का topic है about immunity. So, Right. what are some of the factors which contribute to person's immunity? Well, okay, so it's very interesting, and the reason, we sort of discussed this and we decided that let's take this topic. It becomes much more relevant, and unfortunately, we are now seeing a new wave of COVID infections, right? So, Right. unfortunately, we are recording this at a time where now everyone is again cautious, anxious. The masks are back, and what is there for you to protect against this infection? It's only your own immunity, right? Nothing else would work. It's only the immunity that works. We have learned it in the last 3 years of this COVID infection, and hence immunity now takes the front stage. What is immunity, and what are the factors that affect the immunity? And again, I'm not a doctor, I'm not a nutritionist, but this is by the experience, and because I'm so much connected with the ground now, I know that what are those things that basically help building out. So one is the external factors for your immunity. The external factors being, for example, the pollution, the water, the stress level, your circumstances, your business, your personal life, etc. And then there are internal factors. So we have to step back and realize that what are we made of? What do we need? इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा Roti? मकान. No, it's roti, Hello. pani, and अच्छा, the oxygen. 5 elements, right? 3 elements. It's oxygen, food, and water. Correct. Right? If any of these is impacted or polluted, your body is going to get into a little bit of pollution, and it's going to impact somewhere in your body which is not going to be a normal scenario, Correct. and that's what impacts our immunity maximum. So of course the environmental factors are there. So pollution, maybe you can put a air purifier in your room where you are sitting, and you can get rid of pollution, right? Correct. You can start consuming only the RO water, or maybe the bottled water, maybe the water coming from the springs. You can get rid of the pollution at the water level. Correct. Food, how do you get rid of pollution in the food? And that's what impacts your immunity to the maximum level, because food is what also generates energy in your body. Correct. You're living because the body is using your food, oxygen as the fuel, and the water as the ingredient into the kitchen, the mitochondria in your cell that convert all of it into the energy, and the energy is consumed by the body. And if you have a polluted fuel in the kitchen, Correct. then you are going to have a polluted output and the energy levels, and hence your ability to perform anything whatsoever, be it walking, talking, be it handling a task. So fatigue, and then ultimately resulting into a lot other things. So Correct. immunity is impacted by the basic thing, and of course food being the biggest of among all the factors. So since food is the biggest factor, so how should consumer take care कि मतलब food का कैसे ध्यान रखें कि food is not polluted? All right, so again, I think I will expand it a little bit more and say that how does a food becomes a food? Let's step back and see that what is food. Okay, what we are consuming. So we take a bread, खा लिया, that's the food, right? वो bread बनी कैसे? Yes. आटे से बनी bread. आटा कहाँ से आया? हमने गेहूं लिया. गेहूं कहाँ से आया? प्लांट से आया. प्लांट कहाँ से आया? फार्म से आया. फार्म में what is basic? Soil, Soil. water, Right. and sun. Sunlight. Right? Sunlight, air, which is oxygen and carbon dioxide, water, and soil. So Correct. basically, when we are talking about food, we are talking about the 4 elements: sunlight, water, air, and soil. Soil.
again, water, air and sunlight is something which is probably common to everything. Yes, the food that is growing in the Himalayas, जैसे जस्ट ऑर्गेनिक का फूड है वो उत्तराखंड में उगता है ज्यादातर फूड, तो वहां पे आपका वाटर प्योरर है, इट्स प्योर हिमालयन वाटर. सनलाइट भी अबंडेंस में है क्योंकि प्रिस्टीन एनवायरनमेंट, और ऑक्सीजन भी साफ है वहां पे. कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पॉल्यूटेंट्स नहीं है, PM2.5, PM10, ये सारे पॉल्यूटेंट्स नहीं है. प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, these do not exist. So air is also purer. But the biggest element is the soil, right? So how do you take care of your soil is linked to how do you take care of your food, is linked to how do you take care of your immunity. So it is at that basic level. तो soil अगर हमारी pure होगी तो all the way is to a stage जहाँ पे कि we have a more better immune system for us to defend against the infections like COVID. अब हम ये समझते हैं कि वो सॉइल प्योर कैसे हो सकती है. सॉइल तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्प्योर थिंग्स है ना. कपड़ों पे मिट्टी लग जाए तो सबसे पहले उसे ही साफ किया जाता है कि कपड़ों पे तो मिट्टी लग गई है ना, मिट्टी खा भी नहीं सकते हम. तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्योरिटी, वी टॉक अबाउट द प्योरिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट मेक द सॉइल. और सॉइल बनाता कौन है? सॉइल में आपके ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो चट्टाने थी, पत्थर थे, वो टुकड़े बन जाते हैं. प्लस whatever is going in there, है ना. सो पेड़ पौधे, पत्तियां गिरी, सड़ गए, सॉइल का पार्ट बन गए, इसे ह्यूमस बोलते हैं. फिर आपके ऑर्गेनिक मैटर है, whatever comes out of the living beings is the organic matter that all goes into the soil, है ना. मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी में मिल गए. So when the person dies, that's where it goes, right? So that's all is the constitution of the soil. अब अगर ये सारी चीजें ऑर्गेनिक ही हैं, which means that they have come from the living organism, then the soil is pure. But if something which is not come from the living organism or something that was living at some point in time, then there is a pollution in the soil. Okay. अब इसका इम्पैक्ट कैसे होता है वो भी we should understand this because it's very very logical. There is no rocket science into it. It's very logical. Living being से बनी है, then you have a lot of bacterias which basically disintegrate the living beings and make them into soil. Okay, वो basic elements में तोड़ देते हैं. तो you will have iron, magnesium, zinc, sodium, nitrogen, all different elements. So we have how many elements in the periodic table? So all those elements are present, the trace elements, the major elements and the minor elements. वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है. एंड जो बैक्टीरियाज होते हैं, these bacterias are responsible of disintegration of these elements. So all these elements get into the soil and the plants has the capability to separate and take how much of each element is needed into their body. वो प्लांट की बॉडी में चला गया तो अल्टीमेटली वो हमारे फूड में चला गया. एंड दैट्स द चेन दैट वर्क्स. सो एज लॉन्ग एज वी आर ensuring कि whatever is there in the soil is organic in nature, everything that we eat is maintained. अब let's take a scenario कि हमने उसमें inorganic या chemical डालने शुरू कर दिए. वैसे just do you know ये pesticides कब हमने यूज करने शुरू किए थे और क्यों यूज करने शुरू किए थे? सर कब का आइडिया नहीं है, बट आई थिंक जब इनको अगर फार्मर्स को थोड़ा सा जल्दी ग्रोथ करने के लिए या फिर might be for this reason they started using pesticide. So जब इससे सेकेंड although वर्ल्ड soil वॉर की खत्म quality हुआ, खराब हो जाती है. हाँ, हाँ so जी जब सर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ओके. तो जर्मनी में जब सेनाएं पहुंची, so they found huge sachet, huge this thing of different chemicals, and these chemicals were kept there to kill the people. Okay. अब समझ में नहीं आया अमेरिकन्स को कि क्या करना है इसका. They said if they can kill the people, they can definitely kill the organisms that are smaller than the human.
That was the start of the chemical pesticides. Okay. So these were originally meant to kill. Okay. Okay. So some of those chemicals जो उस समय मिले थे are still being used as pesticides. Industry बहुत बढ़ गई है, but after 90, 80, 90 years also we are using some of those chemicals still. So you can think of the magnitude of the damage that these chemicals can do. Correct. But कितनी भी छोटी मात्रा में अगर इसका छिड़काव होता है तो what happens is that they go into the soil. And the first thing they do is they kill the bacteria. The moment they kill the bacteria, the disintegration stops. Because the disintegration stops, nutrients plant को मिलेंगे नहीं. तो हम क्या करते हैं? Then we put urea. क्योंकि प्लांट को तो न्यूट्रिएंट चाहिए. यूरिया डाल देते हैं और जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाल देते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सोडियम. प्लांट खूब हरे भरे दिखने लगते हैं, मोटे एकदम लश्कर वगैरह बढ़िया आ जाता है. एंड वी से कि यूरिया डाला, पेस्टिसाइड छिड़का, सी व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. कितना मजा आ रहा है, फसल लहला रही है, यू नो, इट्स एकदम सोना उगल रही है मिट्टी. नॉट ट्रू. It's only 18 karat gold, not even gold, maybe 18 karat silver. Correct. तो क्योंकि जो उसमें सारे ट्रेस एलिमेंट्स थे अब वो उसमें प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज वी हैव किल्ड द बैक्टीरिया, वी हैव किल्ड द फूड चेन एट द बिगनिंग. All those micronutrients and the trace elements are no longer present in your plant, and hence no longer present in the food that you are eating, and hence not able to produce the immunity that you otherwise would be receiving from the food. So ये इस तरीके से पूरा का पूरा साइकिल चलता है जो बेस में स्टार्ट होता है and ultimately results into something that is so dangerous for us. करेक्ट. तो सर ऐसे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि एक तो जैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, नेचुरल, बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कैसे पहचाने कि क्या सही है, एंड देन फर्दर हाउ कैन वी इंश्योर कि हम सही चीजें खा रहे हैं. Okay, so इसमें क्या है ना, we have to take a very holistic approach. We cannot say suddenly, you know, wake up tomorrow and we say कि पूरे घर के बदल डालूंगा. No, we have to take it step by step, and we should make sure that when we change, we have done our research as to whom to change for. So यू आर एब्सोल्युटली राइट. अभी मार्केट में तो हर जगह ये चल रहा है, ये नेचुरल है, ये ऑर्गेनिक है, ये पेस्टिसाइड फ्री है, ये रेजिड्यू फ्री है, इसमें केमिकल्स का यूज नहीं हुआ है. मैं एक चीज में बिलीव करता हूं, वो है कि वी शुड ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड अ प्रोसेस दैट हैज बीन certified or is being followed by some trusted, reputed organizations or the companies or the institutes. So organic certification is a process जो पिछले 20 सालों से यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज ने डेवलप किया है, मॉडिफाई किया है, एंड kept on evolving to make sure that whatever reaches to a plate in a for a consumer is basically the material that the brand is basically committing कि मैं आपको ऑर्गेनिक दे रहा हूं तो वो ऑर्गेनिक ही है. So there is a well laid down process over research of so many years. Processes have been laid down very clearly. एंड देन देयर आर एजेंसीज जिनका काम ही ये है कि वो उस प्रोसेस को समझते हैं, वेरीफाई करते हैं, ऑडिट करते हैं, एंड देन सर्टिफाई करते हैं. सो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इज दैट प्रोसेस. इंडिया का अपना प्रोसेस है, अमेरिका का अपना है, यूरोप का अपना प्रोसेस है, बट ऑल दीज प्रोसेसेस समवेयर कन्वर्ज.
they have slight difference in depending upon कि हम excuse me, जब हम इंडिया में हैं तो सर्कमस्टांसेस थोड़ी सी डिफरेंट है, यूएस में थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, बट देयर इज अ वेल लेड डाउन प्रोसेस. सो एक फार्म को जो केमिकल फार्मिंग में रहा है, इट टेक्स 3 years मिनिमम टू कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक फार्म. ओके, तो जो सॉइल की क्वालिटी खराब हो गई है उसको ठीक करने के लिए मतलब सॉइल की क्वालिटी खराब हो गई है, उसमें केमिकल रेजिड्यू हैं, तो 3 साल तक वो रेजिड्यूज उसमें सॉइल में रह सकते हैं. एंड कुछ केमिकल्स तो इतने खराब होते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर ऑन दिस टॉपिक, यू वुडंट बिलीव. जो डीडीटी है, डीडीटी जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो वो म्युनिसिपैलिटी आके जो है ना डीडीटी का छिड़काव करते थे क्योंकि मच्छर को मारना होता था. राइट, अभी भी होता राइट, है मतलब. अभी उसे बैन हुए 20 साल हो चुके हैं, कंप्लीट बैन है 20 साल. डीडीटी की हाफ लाइफ है 80 years. सो दिल्ली मदर्स के मिल्क में डीडीटी ट्रेसेस हैव बीन फाउंड. It is at that level. So you go through this process, you certify a farm, and then everyone in the chain gets through the certification. So agar farm se maine kharida hai, to I will also be certified. If someone else buys from me, he will also be certified, and so on. So consumer ke perspective, it is very important that they should look at certification, that what is certified. Okay. So certification में जैविक इंडिया का certification है. We have the certification for USDA as the US standards. We have the certification for EU as the EU standards. So सबके different logos हैं, which can be easily identified. Maybe I can probably show you here if this is visible. So this is our brand. This is Javik India, which is the India certification. This is India Organic, also Indian certification. This is USDA, which means that this is certified as the USDA, USK standards के हिसाब से, and this is EU, this green European link. Union. So this means that this is certified as per the European standards. So when we export to US, this becomes important. So all of our produce is basically certified as per the American, European and the Indian standard. जो अभी बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है कि ये नेचुरल्स हैं, पेस्टिसाइड फ्री हैं. So these are claims. So natural, what does a natural mean? ऑब्वियसली दाल तो पेड़ से ही उगेगी, मतलब यू विल हैव अ प्लांट और उसी पे उगेगी, तो वो नेचुरली ग्रो होगी. आप दाल को फैक्ट्री में तो बनाओगे नहीं, है ना. हल्दी तो फैक्ट्री में बनेगी नहीं, हल्दी को तो यू विल हैव टू ग्रो. सो नेचुरल जनरली मीन्स दैट इट हैज बीन कल्टिवेटेड यूजिंग द नेचुरल मेथड्स ओनली. कि आपने गोबर की घास खाद यूज की है, कुछ आपने केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किए. बट आई थिंक अभी जरूरत है कि थोड़े से स्टैंडर्ड्स को और इसकी गाइडलाइंस को सेट होने की. तो जब तक वो गाइडलाइंस नहीं आती, देन I mean, I would call them as claims, unless you have something which has already been certified. राइट. सर इसमें जस्ट टू मतलब एक क्वेश्चन था मेरे पास कि जैसे इफ जैसे इतने सारे आप सर्टिफिकेशन लेते हैं, जैसे आई हैव हर्ड जो इंडिया का जो सर्टिफिकेशन है दैट यू हैव टू प्रूव कि उसमें 186 केमिकल्स फ्री होना चाहिए, एंड फॉर एक्सपोर्ट क्वालिटी इसमें 560 समथिंग केमिकल्स फ्री होना चाहिए. तो नेचुरली वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता होगा, तो एक कॉस्ट पे उस पर प्रेशर आता होगा आपके ऊपर. तो हाउ मच अगर जो नेचुरल जो नॉर्मल प्रोडक्ट जो हम लेते हैं आजकल एंड फ्रॉम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, कॉस्ट में कितना डिफरेंस आता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर के लिए कितना उस पे पॉकेट पे हैवी पड़ेगा वो. सो विकास, पहले तो हम ये समझते हैं कि जो नॉर्मल है वो एक्चुअली नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल तो ऑर्गेनिक ही है. अच्छा, दैट इज डेंजरस वन. ओके, राइट, करेक्ट. राइट. वो तो आपके सिगरेट के पैकेट पे जैसे वो दिखाते हैं ना कैंसर का पेशेंट, राइट, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि हर नॉन ऑर्गेनिक के पैकेट पे वो पेशेंट दिखाना चाहिए. राइट. राइट, बिकॉज इट इज डेंजरस. इट इज ओके. डेंजरस. इट कैन किल यू. यू नो, अगर आपने एक सफिशिएंट, तो इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन which can cause so many things. But having said so, क्योंकि the world is towards कि सबसे सस्ता हमें क्या मिल सकता है हम वही खाएंगे, it's more about
quenching your hunger than basically enjoying the food. We can go to a doctor and pay him 2000 rupees as the consultation fee. We can go out and buy a pizza of 2000 rupees. We can give 2000 rupees per month as the Wi-Fi charges. We can give 2000 rupees for the recharge just to use the data pack and all of that. That's the difference of the cost in the monthly budget of a family of four. Right. Okay, so that's where you are. फर्क इतना है कि जब आप हल्दी ऑर्गेनिक हल्दी यूज करते हैं तो यू प्रोबेबली नीड हाफ ऑफ दैट हल्दी एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल और नॉन ऑर्गेनिक हल्दी, क्योंकि सही तो यही हल्दी है ऑर्गेनिक, जो नॉन ऑर्गेनिक है वो तो हल्दी है ही नहीं. सो इतना ही फर्क है. कंज्यूमर की पॉकेट पे इम्पैक्ट सिर्फ इतना ही है, and it is very very easily tolerable. It is only about the mathematics. We suddenly look at the price and say कि यार ये तो डबल प्राइस है, but we should also look at कि वो डबल का इम्पैक्ट कितना हमारी बजट पे. एक दिन मूवी नहीं देखने जाएंगे हॉल में, क्या हो गया, दो लोगों की टिकट के बराबर खर्चा है. So that's where it is. So it is not an impact that someone with a maybe 40-50K of salary per month cannot afford. It's only about the awareness. अवेयरनेस उस लेवल पे नहीं है लोगों में जहां पर दे कैन रियलाइज द challenges and the dangers that are being posted by this non-organic food. There was a research, so it's not that you know these are claims. There have been so many research that have very very clearly proved the link between the organic food and the immunity. So एक एग्रीकल्चर जनरल है, उसमें एक रिसर्च आई थी कि दे फाउंड द इंक्रीज लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स विद इन 1 week ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम नॉन ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक फूड. तो एक हफ्ते के अंदर ही एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ गया था, विच इज अगेन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन बूस्टिंग योर इम्यूनिटी. सर बाय दैट डज दैट मीन कि अगर हम सडनली एकदम से शिफ्ट भी कर देंगे तो हेल्थ पे मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, वही नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए? Yes, so okay, so it's like this. If we could change everything overnight, we should change everything overnight. But what is important is to start the journey. You know, you should start walking to a healthy future. You take the first step, तो मंजिल तो मिल ही जाएगी ना. बट अगर हम स्टेप ही नहीं लेंगे पहले और सोचते रहेंगे यार वो आज आटा तो मिल रहा है, दाल नहीं मिल रही, तो मैं जब दाल भी मिल जाएगी तब ऑर्गेनिक खाना चाहिए. यार दाल तो मिल रही है, आज सब्जियां नहीं मिलेंगी, सब्जियां कहाँ से लाएं हम. जब तक हम ये बैठे हुए एनालाइज करते रहेंगे हम पैरालाइज होते रहेंगे. So we have to get out of this paralysis and the analysis and we have to start walking towards a healthy future. हम पहला स्टेप लें. मैं बोलता हूँ just change something which is most easily available in your neighborhood. आपके घर के पास जो सबसे इजीली अवेलेबल हो आप उससे चेंज स्टार्ट करो. चाहे वो शक्कर है, चाहे वो खांड है, चाहे वो दाल है, चाहे वो सब्जी है, मसाला है, हनी है, गुड़ है, whatever you can get hold of, start with that. You will start seeing the difference. I guarantee. Start seeing the difference. Not only in your health, also in taste. जितनी सारी चीजें हमने बात की हैं इम्यूनिटी के पर्सपेक्टिव से कि all those trace elements, those micronutrients that get into the plant because of all this disintegration being carried out by the microbials and these bacteria, etc. They boost your immunity is exactly also true for the taste. So taste कहाँ से आता है फूड में? फूड में टेस्ट एलिमेंट ऐसा क्यों होता है कि एक सेब हमें बहुत स्वाद लगता है, दूसरे सेब में ऐसा लगता है कि यार इसमें तो स्वाद ही नहीं है, बट मे बी क्रंच ज्यादा है बट स्वाद नहीं है.
एक आम बहुत रसीला होता है, दूसरे आम में मजा ही नहीं आता। कहाँ से आते हैं ये एलिमेंट्स? ये यहीं से आते हैं। Organic food is also tastier because this is a play of different enzymes, and that is all driven because of these micronutrients, trace elements, etc., that go from the soil, water, air, and sunlight into the plant. So coming on the immunity thing only, so what are some of the organic food which we should include in our diet to increase our immunity? जैसे आजकल कोविड इतना जैसे अगेन सेट की केसेस अगेन बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, तो विच आर सम ऑफ फूड लाइक अगर मैं जैसे आज ऑर्गेनिक फूड बिल्कुल नहीं लेता है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो हाउ शुड आई स्टार्ट? So इसकी दो अप्रोचेस हैं, एंड आई विल टॉक अबाउट बोथ द अप्रोचेस। राइट और रॉन्ग दोनों अप्रोचेस में से कुछ भी नहीं है, बट इफ यू डू नॉट वांट टू शिफ्ट एवरीथिंग इनटू ऑर्गेनिक टुमारो, तो दो अप्रोचेस है। एक अप्रोच ये है जो ये बोलती है कि जो फूड मैं सबसे ज्यादा कंज्यूम करता हूँ, I should shift that food into organic. So for example, your rice, wheat and pulses. Okay? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं हम, और इसलिए इसका जो बॉडी वेट है, जो लोड है केमिकल्स का, वो इन्हीं फूड पे सबसे ज्यादा होता है। यू नो, पर केजी अगर मैं लोड निकालूं या पर ग्राम लोड निकालूं केमिकल्स का, तो इनमें सबसे ज्यादा होगा। सो दैट इज वन अप्रोच कि आई शिफ्ट माई रेगुलर स्टफ इनटू ऑर्गेनिक। दूसरी अप्रोच है वेयर आई से दैट the products that I do not wash at all before consuming should be shifted to organic first. क्योंकि जब हम वॉशिंग करते हैं तो कुछ तो ऊपर का एक्सटर्नल रेजिड्यू खत्म हो जाता है, जिसमें फंजीसाइड्स वगैरह होते हैं। जो इंटरनल चला गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट स्पाइसेस, हनी, शुगर, ऑयल्स, घी, tea, all those items which we do not wash before consuming, use less, but the concentration in even in that less quantity is a lot more, and the risk of having external pollutants is also more, is something we should start consuming organic. तो दोनों अप्रोचेस हैं, दोनों साथ में चल सकती हैं अप्रोचेस, दोनों अलग अलग अप्रोच चल सकती हैं, स्टेप बाय स्टेप हो सकता है। वन अप्रोच कैन फॉलो द अदर अप्रोच कैन फॉलो द वन, इट इज इंडिविजुअल्स चॉइस। बट एज आई सेड अर्लियर, स्टार्ट, कहीं से स्टार्ट करें। Important thing is that we should start, and We then should start. and most probably you will start seeing the change, and उसके बाद खुद ही आपको डिफरेंस फील होगा इसके अंदर। खुद ही डिफरेंस फील होगा। आप जैसे जैसे वॉक करोगे तो यू नो लोग मिलते जाएंगे, कारवा बनता चला जाएगा। एंड सर एक क्वेश्चन मेरा आता है, जैसे हम कई बार कोई बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं, तो नॉर्मली उसके अंदर क्या होता है कि व्हेन पीपल टेंड टू आस्क क्वेश्चंस टू एनी ऑफ द बिग कंपनी, वहां से वो आंसर आते ही नहीं है कि दैट हाउ डू यू प्रोड्यूस इट, इफ यू वांट टू सी द फैसिलिटी। तो अगर सपोज आप जस्ट ऑर्गेनिक में कैसे डील करते हैं इसमें कि सपोज ए कंज्यूमर वांट की, बिकॉज कई बार क्या होता है कस्टमर वांट्स की एक बार फैसिलिटी देखना चाहते हैं, दे वांट ए टूर, ऐसे इस चीज में आप कैसे इनको कस्टमर सपोर्ट में कैसे आप हेल्प करते हैं? तो देखिए इसमें विकास जी, हम बहुत ओपन है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, बिकॉज वी हैव नथिंग टू हाइड। जो किसान उगा रहा है, वी आर रेडी टू शो केस एंड गिव इट टू द कस्टमर। सो हम इसमें दो चीजें कर रहे हैं। एक तो वी आर providing a traceability. So we are working on a solution, not working. In fact, we have started implementing that solution where there is a QR code where consumer can actually scan the QR code and see the complete journey of that product before it reaches to your plate. So पूरी journey all the way from the farms, the test report, the production unit, the processing unit, सारी journey हम उसमें capture कर रहे हैं so that a consumer can see it. अगर कोई consumer हमारे farms को visit करना चाहता है, I mean, the consumer is more than welcome to go and visit the farms. It's picturesque, beautiful place. उत्तराखंड में आप जाओ और farm visit करो. I would, invite all of you to come, maybe spend few days, enjoy the life in the pristine air and sunlight, and Away have from your, corporate stress. हाँ मतलब आप पूरा एंजॉय करो। विल बी हैप्पी टू होस्ट एनीवन देयर इन द फार्म्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी कंज्यूमर को प्रोसेसिंग यूनिट देखना है, अगर वो देखना चाहते हैं, तो दैट कैन ऑलवेज बी अरेंज्ड।
So we have our most of our farmers are in Uttarakhand, higher regions में, very small hold farmers. In fact, बहुत सारे farmers alternate income के लिए they also have these home stay, they have been Okay. running. So consumers will be happy to stay there at home, do the cultivation, help out in harvesting, whatever. And then if they want to look at our processing unit, which is also in Uttarakhand, so they are most welcome. That can also be arranged. In fact, a very good point where we can arrange for a video. So हमारी वो QR कोड में traceability में तो वो सारी चीजें available हैं, but we can arrange a video and put it on the website so that if someone wants to look at that, what kind of facility we are talking about, तो वो भी देख सकते हैं. Because yes, it's a good question, because it's very important for the consumer to have that trust, because ultimately we are selling trust, we are selling confidence. And unless we are confident, we can't give that confidence to the consumers. So thank you so much for your time, Pankaj sir. I'm confident that our viewers will gain valuable insight from this session. And what we will do is we will include all the necessary information from Just Organic in the description section, so that if somebody wants to get in touch with you, they can leave comments. And I'm sure Pankaj sir would be happy to answer all the questions. So Pankaj sir, jate jate, if we just want to brief about everything, if somebody wants to shift from, I would say that dangerous food to normal food, which is the Yeah. organic one, how should we start with our journey? Yeah, so basically, thanks a lot, for giving me this opportunity to interact with the consumers. We are living in a dangerous world. I mean, let's put it that way. So we are living in a dangerous world. It becomes more and more dangerous every day. So let's build our armor. Let's build our defense. Let's build our castle around our body. So I mean, ये body ही तो हमारा घर है. So let's build it. Let's strengthen it. Let's put a lot of armor into it, and that's only possible through organic. Start the journey. That's the most important part. No one else but only you can make sure that yes, there is a journey that gets started. It's important to start the journey. Manzil to mil jayegi. So again and again, start the journey, start the walk, take the first step, take the plunge, and you will be happy, I guarantee. Right. Thank you so much, Pankaj, for your time. And it was a great session. I'm sure insightful also for all our viewers. Thank you so much for your time, sir. Thank you so much, Vivek. Thanks, sir. Thank Namaste. you. Bye. Namaste.